ભાવે છે, થોભાવે છે અને હંફાવે છે. So આવા સંજોગોમાં when the whole world is trapped into virus called corona, COVID-19, myself and Dr. Parthiv Mehta, who is senior intensivist and pulmonologist from the city of Ahmedabad, we started Corona Awareness Series way back in March 20. And as medical scientist, while he keeps explaining how our body works and a virus આટલો અમથો છે ને કેમ આખી દુનિયાને હેરાન કરે, તો એ કદાચ એનું આખે ને આખું વોલ્યુમ વિચાર કરીએ ને તો એક ચમચીમાં સમાય એટલો કોરોના વાયરસ, એટલો એનો જથ્થો, એક નંગ નહીં, એણે આખી દુનિયાને હલાવી દીધી છે. અને આપણો શ્વાસ જે સાવ સહજ ચાલતો હતો, we never bothered about the function of lungs and respiratory system until unless we started having coffee. જે લોકો સવારે ઉઠીને યોગ ક્લાસમાં જતા હશે અથવા ઓનલાઈન યોગ કરતા હશે, and when they have been instructed to take deep breath, do we know that in one breath how much free oxygen God is giving us? And we became panic when we needed to pay for the oxygen cylinder, and more panic when even with the payment there was scarcity of oxygen. So with that a little painful note, I start my today's presentation, and I'll avoid slides or anything today because let's talk. આપણે આમ પણ અત્યારે સોશિયલ ડિપ્રાઇવેશનના સમયમાં છીએ. સ્ક્રીન ટાઈમ બધાનો વધી ગયો છે. જે લોકો મોબાઈલ ફોન વાપરીએ છીએ બધા જો ચેક કરીશું ને તો આપણો સ્ક્રીન ટાઈમ કદાચ ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ખૂબ બધો વધારે છે. કારણ કે બાળકો સ્ક્રીન પર ભણે છે, ગૃહિણી યુટ્યુબ પર જોઈને નવી નવી રેસીપી બનાવે છે, અને જે લોકો વર્ક ફ્રોમ હોમ છે તે પણ સ્ક્રીન પર છે. આજે જેટલા પણ લોકો અહીંયા જોડાયા છે તે સૌને સવારનો એમનો સમય આ વિષય સાંભળવા માટે કાઢીને આપ આવ્યા છો તેના માટે ધન્યવાદ. I will surely keep answering as I said on the chat box, so please feel free to send your questions and queries. Let me start with all the different words that we have used in the title, Designing Immunity in 21st Century. આપણે 21મી સદીમાં બહુ આધુનિક જીવન જીવીએ છીએ, વિજ્ઞાનની હરણફાળ છે, બધું મારી હાથમાં છે ને દુનિયા મારી મુઠ્ઠીમાં છે, આવું માનનાર માનવી અત્યારે હવે કદાચ ના છૂટકે કુદરતની શરણાગતિએ છે. અને જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ ડિઝાઇનિંગ, એનો અર્થ એ થાય છે કે આપણી પાસે એવી આશા અને શ્રદ્ધા અકબંધ છે કે આપણે આપણી ઇમ્યુનિટીને ડિઝાઇન કરી જ શકીએ છીએ. આપણે આપણા જીવનને પણ ડિઝાઇન કરી જ શકીએ છીએ. આપણે આપણી તકદીરને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક બદલી શકીએ છીએ જો આપણી પસંદ સાચી હોય તો. તો શું આપણી પસંદ સાચી છે? Life is nothing but all about choices that we make. So let's make good choices. આપણે કેવી પસંદ કરી રહ્યા છીએ તે બહુ જ અગત્યનું છે. Madam, your voice is not audible. Yeah, sorry for that internet disturbance for a while. As we talk on designing immunity in 21st century, તો આપણે એ વિચાર કરવાનો છે કે જો હું મારી ઇમ્યુનિટીને ડિઝાઇન કરવાને સક્ષમ છું તો ક્યાં ભૂલ કરું છું. And the word immunity stands for રોગ પ્રતિકારક શક્તિ. આ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ એટલે શું? જેને આપણે ઇમ્યુનિટીના નામે ઓળખીએ છીએ ને એ બે પ્રકારે હોય, એક્ટિવ
અને પેસિવ ઇમ્યુનિટી. તમારામાંથી કેટલા લોકોને પોતાના રસીકરણનું ટાઈમ ટેબલ યાદ છે? લેટ અસ પોઝ ફોર 30 સેકન્ડ્સ હિયર. અને આપણે મનમાં વિચારીને જો શક્ય હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખીએ કે મેં કઈ કઈ રસી લીધી છે તે મને યાદ છે. I take a pause for 30 seconds here. You may please think and share it in the chat box. Yes. So do we remember how many vaccines we have taken? Oh, somebody says Covaxin, COVID-19, and there are many more vaccines. As a gynecologist, if I talk, as you said in my introduction, that I could give about more than 28,000 plus rubella vaccine to young girls. જે આપણી પાસે અવેલેબલ છે ને એને આપણે વાપરતા નથી અને જે બહુ આગ્ય છે ને એને કેવી રીતે લેવાય એની ભાગદોડમાં આપણે અટવાયેલા છીએ. અમને ડોક્ટર મિત્રોને પણ આવા ઘણા ફોન આવતા હોય છે કે આ પેલો સ્લોટ મળતો નથી, વહેલું મળે એવું કંઈક કરો, કરાવો નહીં. તો આવું બધું કરવું જરૂરી નથી. કારણ કે આપણે જો ઇનેટ ઇમ્યુનિટી, આંતરિક ઇમ્યુનિટી આપણી એક્ટિવ વધારે સારી કરીશું ને તો કદાચ ઘણા બધા બેક્ટેરિયા, વાયરસ આ તે અટકી જશે. એક એવો સમય હતો જ્યારે આપણા દેશમાં શીતળાનો રોગ એકદમ વધારે હતો. પોલિયોને આપણે લગભગ નાબૂદ કરી ચૂક્યા છીએ. એવી જ રીતે ક્ષયના દર્દીઓ ઘટી રહ્યા છે તો સામે એવા પણ દર્દીઓ વધી રહ્યા છે કે જે લોકોને ક્ષય માટે કોઈ દવાની અસર ના થતી હોય અને અતિ ભારે દવાઓ આપવી પડે. આ બધું હું તમને એટલા માટે કહું છું, એક પૂર્વ ભૂમિકા બાંધવા માટે કે આપણી ઇમ્યુનિટી જે આંતરિક છે તે આપણા આહાર વિચારથી બને છે. ઘણી બધી વાર આપણે શું ખાવું ને કેવી રીતે ઇમ્યુનિટી વધારવી તે અત્યારના સમયમાં જોઈ રહ્યા છીએ. આપણા લીંબુના ભાવ કેટલા વધારે છે. આપણે બધાએ કદાચ છેલ્લા 1 વર્ષમાં ક્યારેય નહીં પીધું હોય એટલું લીંબુનું શરબત પી લીધું હશે, કન્સિડરિંગ કે ભાઈ આપણને આ લીંબુમાંથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધશે, વિટામિન સી મળશે. સિઝનમાં મળતા આમળા એ કદાચ આપણે નિયમિત રીતે ખાઈશું. પેલા ચૈત્ર મહિનામાં ગળોનું પાણી ને લીમડાની કડવાશને પીશું. આ બધું વડીલો કહેતા હતા ત્યારે the new generation used to say that hey, આવું બધું તો કાંઈ હોતું હશે. And then we realized that it was all science even in the ancient times. And many of the things that can enhance our immunity, they were there in the kitchen. આપણા રસોડામાં દાદીમાનું વૈદ્યું ચાલતું હતું અને એમાંથી કેટલા લોકો સાજા પણ રહેતા હતા. તો આ સાજા રહેવું એ આપણા હાથમાં છે. અને સ્વસ્થ હોવું એટલે શું? તો વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા એમ કહે છે કે સ્વસ્થ હોવાનો અર્થ એમ નથી કે હું બીમાર નથી, પરંતુ if I am physically, physiologically, emotionally, psychologically, sexual, spiritual and financial આ તમામ ક્ષેત્રમાં સ્વસ્થ છું તો હું સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છું. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાની આવી વ્યાખ્યા સાથે આપણે આગળ વધવું છે. અને 21મી સદીમાં જે કાંઈ પણ ઇમ્યુનિટીની મારે વાત કરવાની હોય તો કદાચ આવનારા વર્ષોમાં વાયરસ હશે, બાયો વોર હશે, ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ હશે. આ બધાની સામે મારે ઇમ્યુન બનવાનું છે. આજે મારે વાત એમ કરવી છે કે માત્ર ઇમ્યુનિટી એટલે કે રોગ સામેની નહીં, પરંતુ જેવી રીતે તમારા શાળા, કોલેજ કે સંસ્થા, એનએસએસ હોય, એન્જિનિયરિંગ કોલેજ હોય કે મેડિકલ કોલેજ હોય અથવા આપણું ઘર હોય, આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે આપણા બાળકોનું ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ થાય, સર્વાંગી વિકાસ જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. તો આ સર્વાંગી વિકાસ થવા માટે શું શું જરૂરી છે? સૌથી પ્રથમ મારી પોતાની તૈયારી કે મારે સ્વસ્થ રહેવું છે. શું હું સ્વસ્થ રહેવા તૈયાર છું? અને જો એનો જવાબ હામાં હોય તો હું એના માટે કેટલું સભાનતાપૂર્વક કાર્યરત છું? આ બીજો પ્રશ્ન છે. ઘણીવાર આપણને એમ થતું હોય ને મારે ભણી તો લેવું જ છે, 1 થી 5માં નંબર તો લાવવો જ છે. I want to be ranker, I want to be scholar, I want to score high in my exams.
પણ પછી સવારે પેલી શિયાળામાં રજાઈ ખસેડીને ઉઠીને ભણવા બેસવામાં જો પ્રોક્રાસ્ટિનેશન આવે તો આપણે પાર પાડી શકતા નથી. So whenever we think about taking decision or taking charge of emotions or health, the first prerequisite is my willingness to work towards my goal. અને આપણા બધા પાસે એક ગોલ છે કે મારે સ્વસ્થ રહેવું છે. તો આ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વિશે સહેજ વધારે વાત કરીએ. બે પ્રકારે ઇમ્યુનિટી હોય, એક્ટિવ અને પેસિવ. એક્ટિવ નો અર્થ એવો છે કે આપણને નાનપણમાં ઓરી અછબડા થાય અને આપણા શરીરમાં એ કોઈ પણ પ્રકારના જીવાણુ, કીટાણુ, વિષાણુ જાય એટલે આપણા લોહીમાં ફરતા રક્ત કણોની સાથે ત્રાક કણો, શ્વેત કણો, પ્લાઝમા આવું બહુ બધું છે. એમાંથી જે શ્વેત કણો છે ને એ પોતાનું કામ એવું કરે છે કે જે કંઈ પણ બહારથી હુમલો થાય તેની સામે લડવા માટેનું આર્મી બનાવે છે. અને એ જે આર્મી બને છે, that is called immunity. If you know, if there are female students or professors or teachers or somebody could have seen the reports of test called TORCH, TORCH. એ બધામાં તમને IgG, IgM આવું જોવા મળે છે. IG stands for immunoglobulin. G and M, they explain us and give us clue about recent or past infection. તો એનો અર્થ શું થયો કે કોઈ પણ સમયે આપણા શરીરમાં કાંઈ પણ બહારથી હુમલો થાય છે ત્યારે આપણું શરીર એકદમ સામે ડિફેન્સ મિકેનિઝમ બનાવે છે. જેવી રીતે બોર્ડર પર છમકલું થાય અને આપણી આખી ફોર્સ તહેનાત કરી દેવામાં આવે અને બધા રેડ એલર્ટમાં થઈ જાય ને, એવી જ રીતે આપણા શરીરમાં પણ આ રોગના હુમલા સામે રેડ એલર્ટ થાય છે અને જે આર્મી બને છે, that is immunity, જેને આપણે સાદી ભાષામાં રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આવું કહેતા હોઈએ છીએ. તો આ રોગ પ્રતિકારક શક્તિની ઇમ્યુનિટીમાંથી આજે મારે થોડુંક વાઇડર હોરાઇઝન પર વાત કરવી છે. Considering I am also addressing the youth of India here based at Surat અને કદાચ વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ છે એટલે બીજી ઘણી બધી જગ્યાઓએ. તો આ સમયની ચેલેન્જીસ કેવી છે? Madam, Yes. One of the participant is requesting that if you speak in Hindi, then because he is from outside Gujarat. I understand. So we will make a mix of Hindi, Gujarati and English in that case. Yes. As I was guided for and instructed about English and Gujarati, I've been doing it. But yes, as I say, people are across country here and maybe even more. So I'll make sure that everyone understands. So when we talk of immunity, जहाँ हम बात करते हैं कि क्या खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्या सोचने से बढ़ेगी और क्या करने से बढ़ेगी. So in this pandemic, let me tell you the first thing, which is CAB. આમ તો આપણને કેબ બોલાવો એવી ખબર હોય છે, but I want to go to airport, railway station, anywhere. Cab book किया क्या? So now let's take that cab into a different mode. CAB, that is COVID appropriate behavior, जिसके अंदर आता है हमें मास्क पहन के रखना है. कौन सा मास्क पहनना है, कैसा मास्क पहनना है, N95 पहनना है, सादा वाला पहनना है, ये चलेगा वो चलेगा, कौन सा अच्छा. We need not to get in those details now. The time has passed. Those who are frontline warriors working on the floor, जिनको अस्पताल में काम करना है, मरीजों के साथ रहना है, they need N95. अगर हर कोई N95 पहनने लगेगा और डिस्पोज करने लगेगा तो समाज के अंदर हम एक बहुत बड़ा सा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करेंगे और हम इधर उधर फुटपाथ पे डालेंगे. That will actually enhance the chance of spread of other infections as well. So COVID appropriate behavior में सबसे पहले है मास्क. मास्क को कैसे पहनना है? You have to cover nose and mouth both. ये वाला मास्क जो लोग पहनते हैं गलत है. बहुत सारे लोग तो ऐसे ही लटका के घूमते हैं and फिर वो लटक जाते हैं with the infection. Let us make the proper use of mask. The washable mask, double layer, is good enough when you are not visiting hospital or crowded places. COVID appropriate behavior का दूसरा पहलू है 2 गज की दूरी बनाए रखो, 6 फीट का distance. And the third important aspect is frequently washing hands. हम जब साबुन से हाथ भी धो लेते हैं
तो इतने जल्दी में होते हैं कि लेस देन 10 सेकेंड में तो हम धो के निकल जाते हैं। आज के दिन में आप जब वॉश बेसिन पे हाथ धो रहे हैं, प्लीज हैव अ लुक एट योर क्लॉक और वॉच and make sure that the skin remains in contact with the soap water for at least 30 seconds, and make sure that between the fingers, and this way you wash the hand properly. Let that soap water be on hand for 30 seconds and then wash it. Laga diya, do diya, it is not going to help. So rather than using expensive sanitizers and this and that, simple soap water suffice. So immunity, COVID appropriate behavior, इन दोनों को मिला के आगे चलते हैं. That the most important thing is hygiene. आज हम सिर्फ कोविड की भी बात नहीं करना चाहते हैं. I want to give it a broader perspective. ये हुआ हाइजीन के लिए. सेकेंड थिंग, हम खाना क्या खा रहे हैं. तो ये व्हाइट ब्लड सेल है, हीमोग्लोबिन जो है, अगर हीमोग्लोबिन मेरी बॉडी में बराबर से है, I have good level of hemoglobin, each red blood cell has capacity to carry oxygen, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं. આ પ્રાણ વાયુ આપણા શરીરના ખૂણે ખૂણા સુધી પહોંચે છે, આંગળીના ટેરવા સુધી અને મગજ સુધી. So when it comes to RBC and hemoglobin, to attain good level, we need iron and protein, because तभी जाके उसकी, अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह से हर जगह घूम रहा है, it gives good nourishment to cells, good nurturing, and it has power to give vitality to each single cell to perform its function well. तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें हाई आयरन और हाई प्रोटीन लेना है. प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? तो सीरियल्स, कठोल खाना है, स्प्राउटेड, बॉइल्ड, वघारेला, बाफेला, फणगावेला, मग, चना, રાજમા, તુવેર, જે પણ તમને ભાવે છે તે. When we talk of high iron, beet roots, उसके ऊपर लेमन डाल दीजिए, that gives very good rise in hemoglobin. याद रखिएगा, आप कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसके ऊपर अगर लेमन ड्रॉप या साइट्रस कुछ भी डाल दिया, तो अपनी ह्यूमन बॉडी हैज पावर टू एक्सट्रैक्ट 40% एक्स्ट्रा आयरन फ्रॉम द सेम अमाउंट. ये सब चीजें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही काम करती है. मैं बात कर रही हूँ शारीरिक इम्यूनिटी की. I want to go to the next point, which is passive immunity, जहां आपने चेक बॉक्स में लिखा कि आपने कोवैक्सीन ले ली है. बाकी वैक्सीन तो हम अभी याद ही नहीं कर रहे हैं, पर क्या वैक्सीन ले ली तो मास्क नहीं पहनना है? पहनना है. वैक्सीन इज नॉट फॉर 100% प्रोटेक्शन. कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज टू बी मेंटेन्ड. उसमें कोई कंजूसाई, कोई डिस्काउंट नहीं करना है. वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन कई तरह से बनती है, फिर वो कोई भी चीज के लिए हो. या तो जो वायरस है उसका कोई अंदर का एक भाग निकाल के, या डेड वायरस या लाइव वायरस. अपने पास पोलियो की 2 बूंद, रूबेला वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, स्वाइन फ्लू वैक्सीन, ये सब अवेलेबल है. सबकी बनने की अलग अलग रीत है. Now any vaccine when it is administered in the human body, वो एक छोटा सा स्टिम्युलस है ना, कि जैसे बॉर्डर पे कुछ छोटी सी बात हो गई तो एवरीथिंग इज रेड अलर्ट, तो बड़ा सा हमला होगा तब पीपल आर रेडी. Similarly, when vaccine is administered in the human body, they give stimulus and our body learn to develop defensive mechanism, जिसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी. धनुर की रस्सी अगर हम देख लें, ऐसी कई रस्सी जो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है. नाउ आई मूव टू द अदर पार्ट. ये वैज्ञानिक तरीका है समझने का, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, डिजीज इंड्यूस्ड वैक्सीन इम्यूनिटी एंड वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी. पर ये 21st सेंचुरी में 2020 का जो पूरा वर्ष, द होल ईयर, द पैंडेमिक ईयर has put us in many trouble, not only medical. Many people have lost their jobs, livelihood, maybe lives. कई लोगों की मृत्यु हो गई है. कई families have lost their bread earner. So एक बड़ा सा चैलेंज आया, फाइनेंशियल एंड सोशल सर्वाइवल. उसके लिए भी समाज को इम्यून बनना पड़ेगा.
सिर्फ शारीरिक इम्यूनिटी is not enough. So how do we take challenges in the world like this? And if I connect back to that definition of World Health Organization about being healthy, तो ऐसी परिस्थिति में शरीर, मन, जेब, हमारी आस्था, ये सब कैसे बनाए रखना है? How can we maintain that? Regular exercise has important role in maintaining fitness of the body and immunity. इसी तरह से अच्छी नींद जरूरी है। हम सोते समय भी वही विचार करें, मेरे घर में किसी को कोरोना हो गया तो क्या, कल जाके कुछ हो गया तो क्या, मेरी नौकरी छूट जाएगी तो क्या, ये सवाल सहज है। But corona also has brought in many issues like apprehension, anxiety, insecurity, fear, frustration and anger at times. तो ये सब इमोशनल चैलेंजेस के सामने भी हमें इम्यून होना पड़ेगा। Social deprivation is one more reason why people are emotionally disturbed. उसे हम कैसे ओवरकम करें? जैसे रोग प्रतिकारक शक्ति जरूरी है, जैसे फिटनेस जरूरी है, इसी तरह से इमोशनल स्टेबिलिटी जरूरी है। विश्व आरोग्य संस्था ने यह भी कहा है कि जो कुछ भी हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हो रही है, जो भी लक्षण हो रहे हैं, the symptoms and sign that comes to us on physical level to what we call illness, उसे अगर गौर से देखिए तो 80% से ज्यादा समय उसकी रूट्स are either into mind or thinking pattern. अगर हम हमारी सोच को बदल सकते हैं तो हम हमारे रोग को बदल सकते हैं। Louise Hay, who was born in the US in 1926, she could conquer her cancer without therapy, medical therapy, and with the mainstay therapy of mirror work that I keep offering on my workshops on Heal Your Life. ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि कोई भी रोग है, उसके सामने हमने रोग प्रतिकारक शक्ति बनाना है तो शरीर और मन दोनों को जुड़ना जरूरी है। We are not treating reports. कई बार कोई न कोई फोन से पूछ लेता है, जानना चाहता है डी डाइमर इतना है, उसको अच्छा हो जाएगा, सीआरपी बढ़ गया है तो कितना सीरियस बोल सकते हैं, सीटी स्कोर वैल्यू ये है, ये क्या अच्छे हो जाएंगे? ये कोई एक पैरामीटर, वन फैक्टर कैन नॉट डिसाइड प्रोग्नोसिस। अगर आप हट्टे कट्टे इंसान हो पर मन से टूट गए तो वो रोग आप पे हावी हो जाने वाला है। So to be stable and fit at the mind and emotion is very essential. अगर उसे एक लाइन में कहना है तो I would say the healthy mind makes healthy body. हमारे शरीर में एक दिमाग है ऐसा नहीं है, उसे स्वस्थ और खुश रखेंगे तो शरीर खुश रहेगा। So now the important aspect is physical कैसे फिट होना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, खाना है, पीना है, सोना है, इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करना है। In the 21st century it seems that wars भी वो नहीं होंगे जहां हम तीर भाला लेके जैसे पहले लड़ाई होती थी ऐसी होती थी, न तो अभी तोप गोले छूटेंगे। We are probably entering into an era जहां हमारे आसपास ही बहुत सारे छोटे मोटे चैलेंजेस होने लगे हैं। इसमें से अगर बाहर निकलना है तो माइंड एंड बॉडी दोनों को अलाइन करते समय जितने भी नेगेटिव थॉट्स हमारे में जनरेट होते हैं उसे भी हमें कर्टेल करना पड़ेगा। So if I am talking about designing immunity in 21st century, then we are designing super duper buildings. We are having sky rising buildings. We are also having too good machinery. When I'm talking to so many engineers on this virtual platform, we are designing machines, automation, robots and whatnot. अगर हम ये सब डिजाइन कर देते हैं, पर हमें याद रखना है कि we need to design our thoughts and emotions because they are very capable tools of designing our life, health and happiness. अगर कोई विचार जो दिमाग में उठ जाता है
उसी विचार को हमने ऊर्जा दे दी, तब वो इमोशन बन जाता है। आई गिव एन एग्जाम्पल, मेरे घर में किसी को कोरोना हो जाएगा तो क्या, रात को ऐसा विचार आया, नींद उड़ गई, एंड दैट्स अ थॉट। आप सुबह उठे, घर में किसी को खांसी लगी, उस विचार को एक ऊर्जा मिल जाएगी, खांसी हुई, अब भी टेस्ट करा लेते, क्या हो जाएगा। हम पूछेंगे भी नहीं कि अभी आपने क्या खाया, क्या पिया, रात को सोए थे कि नहीं। The moment we have a thought and we add energy to it, it becomes fear. So जब भी हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाता है, just say hello to it. Do not do shake hand with it. उसको पकड़ के नहीं रखना है, उसको जाने देना है। That is one important part of designing immunity. What all I am talking is probably these are the component or content for making a blueprint of designing our own immunity. And when I say our immunity, let us be generous enough कि मैं पहले मेरी खुद की immunity बना दूं, बढ़ा दूं, and then I help others to have at a larger scale a super happy social and societal immunity. जैसे हम एयर ट्रैवल करते हैं तो फ्लाइट टेक ऑफ करे उससे पहले सिखाते हैं ना कि आपका लाइफ जैकेट सीट के नीचे है, कैसे पहनना है, दैट एयर होस्टेस विल गिव अस डेमो। एंड वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोलते हैं कि दूसरों की मदद करने से पहले अपने को हेल्प कर लीजिए एंड देन मूव टू अदर्स। सो इम्यूनिटी अगर डिजाइन करनी है तो आने वाले दिनों में भी या 21वीं सदी में भी हमें ख्याल करना है that if I am taking good care of myself, I'll be able to take care of others. And that care is not only physical, that मैं जिम में गया, मैंने योग कर लिया, मेरे को कुछ नहीं होगा। We have lost people in corona pandemic who were fitness freak, जिन्होंने हर रोज योग किया है, जो हर रोज जिम में जाते थे, जो बहुत दौड़ सकते थे, जो फिजिकली बिल्कुल फिट थे। So we cannot predict anything and everything based on our exercise regime. And जैसे हम फिजिकल फिटनेस के लिए दौड़ते हैं, जो हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति बनाने में, हमें मजबूत होने में मदद करता है, for the very reason it also increases happiness chemicals. जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि अगर आप 10 दिन एक्सरसाइज करने के बाद 3 दिन नहीं जाते हो, स्विमिंग करते हो, दौड़ते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको मजा नहीं आएगा। Because when you do exercise, there is release of chemicals, happiness chemicals in body, endorphin release होते हैं जो मूड एलिवेटर के जरिए हमारे लिए काम करते हैं। अगर जिस तरह से हमें फिजिकल फिटनेस के लिए काम करना है, बॉडी स्ट्रेच करना है, उसी तरह से अगर इमोशनली इम्यून होना है तो इमोशनल जिम करना है। What is that? I need to be aware of my emotion, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे जरूरत पड़ने पर कॉफी टेबल पे सामने बैठ के बात कर लेना है। एंड जो नेगेटिव इमोशंस है उसे रिलीज करना है, पॉजिटिव इमोशंस है उसे मजबूत बनाना है। कैसे करेंगे? अगर आप कोरोना से डरते हो, कई दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकले हो, निकलना चाहते भी नहीं हो, दोस्तों से मिलते भी नहीं हो, एंड पीपल मे बी टीजिंग यू, अरे यार क्या होने वाला है, चलना सब मिलते हैं, तू भी आ जा। और अगर गए और घर जाके किसी को कोरोना हुआ, देन यू एंटर इनटू द फेज ऑफ गिल्ट। ये गिल्ट फिर से नेगेटिव इमोशन आ गया जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम कर सकता है। Now I'm trying to help you understand कि हमारी मन, विचारधारा और शरीर कैसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग कैंसर का एक स्टडी है, विश्व भर में देखा गया है कि जो भी नेगेटिव इमोशंस हमारे शरीर के मन के अंदर जुल मिल जाते हैं तो वो हमारी शारीरिक रोग प्रतिकारक शक्ति को कम कर देते हैं। यू ऑल्सो माइट हैव सीन कि अगर आईसीयू में जिन लोगों को भर्ती होना हुआ, आइसोलेशन हो गया कोरोना वार्ड में, जहां अपने लोग दिखते नहीं है, चाहने पे भी आप अपने ही स्वजन के लिए अस्पताल जा नहीं सकते हो। यू कैन नॉट सिट बिसाइड देयर बेड, you cannot touch them, you cannot go into their room and sleep with them, talk to them, sit with them. तो ये जो एक इमोशनल डिप्राइवेशन हो जाता है, that also is making people very uncomfortable
और वो अकेलापन उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता को कम कर देता है। Unfortunately, we are not very tuned to enjoy our own company, or we are not very comfortable in our own solitude. The disclaimer here is this may not apply to everybody, पर ज्यादातर हम देखें तो the human species is meant to communicate. We are wired to mingle, talk and to be together. हॉस्पिटल में जाके वही डरावना वातावरण, द मशीन्स, दोज बिप बिप करते मॉनिटर्स। एंड वैसे तो आप अस्पताल में जाते हो तो देयर आर nurses, doctors who come to your bed with a smiling face and you can see people around. If you have a next bed patient and उनका सगा चाय लेके आता है, ज्यादातर भारत देश में कोई ना कोई गुजरात में पूछ लेता है क्या आप आधी चाय लोगे? अभी तो ना कोई रिश्तेदार है वार्ड में, और जो लोग सेवा भी कर रहे हैं एज फ्रंटलाइन वॉरियर। When I say सेवा, do not connect it to their payment. They may be drawing their salary, but the risk that they are taking is much higher than that. पर वो सब भी लोग अभी पीपीई किट में हैं, उनको भी आप मुंह से पहचान नहीं सकते हैं, उनकी स्माइल मास्क के पीछे शायद दिखती नहीं है। But don't you think that designing immunity in 21st century, the year 2020 has taught us to read our eyes? हम किसी की आंखें पढ़ना भूल गए थे। Body language has an impact on the person who deliver and receive any kind of communication, verbal या non-verbal. तो ब्लूप्रिंट अगर बनानी है 21वीं सदी की इम्यूनिटी की, तो उसमें ये भी डाल दीजिएगा कि हमें कुछ भी पढ़ना आता है, हम कुछ भी सीख लिए हैं, बहुत पढ़ लिया है, आईआईटी चले गए, डॉक्टर बन गए, फॉरेन यूनिवर्सिटी जाके आए। What matters is just one language, and that is the language of humanity and love. Louis Hay said, "Love is a miracle cure." क्या हम कोई भी इंसान जो कुछ भी मुश्किल में है, उन्हें एक छोटी स्माइल नहीं दे सकते? What do we do when someone start talking of their fear? Let me come to a blueprint of designing. जैसे अगर मैं मशीन के बारे में बात करूं, आप इंजीनियर्स हैं तो, कि एक प्रोटोटाइप बनता है, एक मॉडल बनता है, एंड देन वो अपस्केल होके मल्टीप्लिकेशन में जाता है। तो कोई एक पुर्जा उसका अगर ठीक नहीं चल रहा है तो पूरी मशीन अटक जाती है कि नहीं? उसी तरह से जब पूरे शरीर में हमारे लंग, हार्ट, किडनी, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स, ब्रेन, ये जो सभी सिस्टम भगवान ने बनाई है, and each human body is an amazingly crafted divine gift from God. 21वीं सदी में उसकी इम्यूनिटी डिजाइन करनी है, then important question to ask, or I would say introspect ये करना है, whether am I using my body or am I abusing my body? Whether am I channelizing my potential into the right direction or not? जिक्सो पजल जैसे बनाते हैं, कोई एक ही छोटा सा टुकड़ा मिसिंग है तो वो पूरा बनता नहीं है। उसी तरह से फिजिकल इम्यूनिटी कुछ भी हो, फाइनेंसिस कुछ भी तगड़े हो, सभी सुविधाएं हो, पर अगर दिमाग में डर है तो वो हैप्पीनेस का जिक्सो पिक्चर बनने वाला नहीं है। Anxiety and apprehension are normal part of life, and no one can have life which is stress free. जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन्हें करियर की चिंता होगी, जो लोग पेरेंट्स हैं उन्हें फाइनेंस की चिंता होगी, बच्चों की फीस भरने की चिंता होगी, जो लोग हाउसवाइफ्स हैं उनको घर चलाने की चिंता होगी। We have to learn this time and now on that to build our immunity well, we need to look at situations differently. हम चाहे तो हर कोई सिचुएशन में स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, and if I make a choice, I can take any challenge and sail through it with the minimum stress. हाँ, आपको शायद लग सकता है कि जो आप बोलते हो उतना आसान नहीं है। आसान नहीं है जब हम सीखते हैं,
एक बार सीख लेते हैं फिर तो वो बहुत ही आसान है, क्योंकि देन दैट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। अगर आज ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, प्रोफेसर जो भी जुड़े हैं, if you have to share one word that bothers you the most, can you please put in the chat box, comment box? एक शब्द जो आपको बहुत ही बॉदर कर रहा है, या तो one emotion that is bothering you the most. I take a pause for a few seconds and I wish that you participate actively on this session. With the classroom teaching gone and the virtual teaching in and screen time on, I guess we have, though we miss that social connect, we have taken it so easily that when it comes to communicate, connect on the virtual platform, we don't feel that comfortable. While I keep asking these questions on various sessions, what comes up is fear, uncertainty, no one understands me, hurt, and insecurity. हम असलामती बहुत ही महसूस कर रहे हैं, बहुत ही असलामत फील कर रहे हैं हम। कल क्या होगा, कैसे करेंगे? सो इन दैट केस, अगर हम हमारे मन को एक ज्यादा पावर दे देते हैं, जो मेरी पहचान में आप बता रहे थे, while you were introducing me and saying that I've been known for affirmations because 25 साल की एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की जो मेरी कारकिर्दी है, and I'm celebrating silver jubilee of being a gynecologist with active practice, मैंने देखा कि जैसे WHO का स्टेटमेंट है, उसी तरह से अगर थोड़ा हम डॉक्टरी लेंस से मरीज को देखें, तो कई बार उन्हें सुनना वही उनके लिए थेरेपी हो जाता है। मेनोपॉजल वुमन विद द बैकएक, हेडेक, स्लीप डिस्टर्बेंस, शायद उनके बच्चे अभी पढ़ने को परदेश है, बाहर है, हॉस्टल में है, हस्बैंड इज बिजी, सब कुछ सुविधाएं हैं, बट दैट लोनलीनेस, घर खाली हो गया है, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम जो हम बोलते हैं, उनको लगता है मैंने सबके लिए बहुत कुछ कर दिया, अब मेरे पास कोई नहीं है। वो अकेलापन उसे बहुत ही परेशान करता है। So even in pandemic and in 21st century, अगर हम एक दूसरे की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो हम हमारे दोस्तों को ही नहीं, कई बार स्ट्रेंजर को भी एक स्माइल, एक हेलो का फोन कॉल, कैसे हो, वो कर लेना जरूरी है। Now comes a new challenge because in 21st century we do have a lot of distractions. हम जो भी कहना चाहते हैं, हमारे पास इमोजी है, इमोटिकॉन्स है, and emotions are in trouble. जितनी भी बार मैं स्माइली इमोटिकॉन लिखूं, मैं सही में खुश हूं, and if I am hiding my feeling and appearing different on the screen, I am creating an internal conflict, and that conflict kills me from within. So when you design immunity for your own self in 21st century, make sure that we dare to appear what we feel. I don't mean to say that if I'm disturbed, I need to go to Facebook and shout out loud that I'm in trouble. But I must have a few friends wherein I can call them 24/7 and say that chal coffee पीवा जाऊं छे, मारे कईक बात करवी छे, and it might happen that when you go out, you just don't talk because the silence presence of someone next to you can build up your emotional immunity. Just be there. मैं हूं ना, कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूं, હું સદા તારી સાથે રહીશ. I owe you for a life. આ વાક્યો, they are important component of building immunity at all levels. And if we connect it all to the other aspect of beyond science and moving to a bit of tinge of spirituality here, कि जो होना है होके रहता है, होने को हम अनहोनी नहीं कर सकते हैं, it is designed in the destiny. ये सब स्टेटमेंट हम सुनते हैं, सही बात है, पर क्या हम तैयार हैं आने वाले दिनों के लिए? If I surrender to that statement that जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, let me at least put the other part of it, the next part to that sentence, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा.
पर हमारा भरोसा कहीं ना कहीं टूट जाता है, हमारी श्रद्धा कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है. So to build the immunity, we need to have patience, perseverance, and one more component is gratitude. मेरे पास क्या है, मेरे साथ, मेरे स्वजन के साथ, whatever is happening to myself and my family, am I grateful to some power in the universe that is doing it all? And when I say it's a cumulative effort for immunity, ahar and vichar, food for thought, food for stomach, nourishing thoughts, nutritious food, good teamwork, supporting each other, holding hand in time of need, and giving someone trust that I'm there for you, and then proving it true, maintaining that trust, not breaking the trust. These are the ways and means to design immunity, may it be 21st century or any other century. As I've been talking for about past 45 minutes, and we may talk for a few more minutes or whatever time that Darshan Bhai has decided and the organizing committee has decided. But if you have any question, we can keep the forum open, or we can have a chat box to be used. Meanwhile, I would like to add that being mindful and learn to live in the present moment is also a way to enhance immunity. We keep worrying about the past, we have apprehension for future, and we move in the dilemma in between that is actually affecting our immunity in negative manner. आपकी जो भी आस्था है, आपकी जो भी श्रद्धा है, जो भी नाम से आप ईश्वर को या सुपर पावर को पहचानते हैं, उनसे दोस्ती बनाए रखिए. If we take an example of गीता, कर्म करना वो मेरा काम है, it's my duty, फर्ज है मेरा. पर वो कर्म का फल क्या आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कौन देगा, कब मिलेगा, उस अटैचमेंट से if I can drop off myself and if I can give my 100% potential to any activity, that is the way to go to build immunity. Otherwise, while we are building all other things on the blueprint, the factor called hurt, distrust brings bumps on the way on the journey of building immunity. And any such negative emotion has, as I said, role to reduce the immunity. ओशो ने बहुत अच्छे से कहा है कि सेल्फ केयर इज अ डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर वाज अ टाइम जब हम एक साथ मिलते थे, खेलते थे, खाना खाते थे. सोशल डिप्राइवेशन हो गया है, वो सभी इमोशंस चले गए हैं. And if you have more time on the screen, I am giving you a master key to enhance immunity. आज के दिन में आप जब भी मिरर में देखो, घर जाके या सेल्फी मोड पे, try to look into your eyes deeply. उतना deeply खुद की आंखों में देखना है जैसे I am traveling inside my body. If you can do that for 3 to 5 minutes, there will be a rush of emotion on the surface. Just acknowledge. सिर्फ उन्हें देखना है साक्षी भाव से. अगर हर कोई इमोशन के साथ उसी क्षण में हम जुड़ गए, it has power to distract us. 10:30 बजे ऑफिस जाते समय रेडियो पे कुछ सुन लिया जो चिंता थी, न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया जो नेगेटिव था, दुखदाई था. It has power to spoil the day. पर उसी वक्त उस नेगेटिव थॉट को मैं ऐसा जवाब दे दूं that I have noticed your presence, I welcome you and park you aside. Let's talk tomorrow. And हर दिन के अंदर एक ऐसा 15 मिनट का समय, that is called time with negative thought, TNT. पूरे दिन में आने वाले विचार को वहां पार्क कर दीजिए.
दूसरे दिन जो भी टाइम तय किया है आपने, सुबह 9 बजे का, दोपहर को 12 बजे का, कुछ भी, whatever time you have decided, just think what were the negative thoughts yesterday जिनके साथ अभी मेरे को बात करना है, and take my words, जितने दिन में आए होंगे उसमें से शायद 90% चले गए होंगे। बिकॉज आज से 5 साल पहले रिसर्च ऐसा बताता था कि every human being in 24 hours sometimes thinks more than 60,000 thoughts. नया रिसर्च आ रहा है कि शायद कोई बार 12,000, 17,000 कुछ भी thoughts, but we think thousands of thoughts in our mind constantly. So अगर डिजाइनिंग इम्यूनिटी इन 21st सेंचुरी की बात है, हम फोन को पासवर्ड लगा देते हैं स्क्रीन लॉक के लिए, गाड़ी के अंदर लॉक है, घर के अंदर जो टेलीविजन चैनल का सेटअप बॉक्स है उसमें चाइल्ड लॉक है, बैंक के लॉकर में लॉक है, हर ऑफिस में वो अंगूठा डालने वाला खुद का बायो लॉक है। इतने सारे पासवर्ड अगर हम देखते हैं और लॉकिंग सिस्टम रखते हैं, तो जैसे हम ये मास्क इधर पहनते हैं ऐसे ही यूं क्यों नहीं पहनते हैं? And if I can actually control the traffic going into my mind and उस negative thought को मैं वहीं रोक दूं, that helps me build up immunity. Because more than 80% thoughts in our mind are repetitive and about 85 to 90% thought can be negative. तो अगर एक नेगेटिव थॉट को रोका जा सकता है तो उसकी कितनी सारी रिपीटेशन में से हम खुद को बचा सकते हैं। And if I can save my energy from that negative repetitive thought, I keep my mind space open to think something positive. And जब भी हम किसी को बोलते हैं be positive, उस पे हथौड़ा लगता है। Let's be very careful हम कब कैसे किससे क्या बात करते हैं। ये जो भी आज हम बात कर रहे हैं under the title Designing Immunity in 21st Century, I try to touch upon the aspects of physical, physiological, psychological, emotional immunity. And to sum it up in last few minutes, financial challenges are also there. Spiritual challenges are there. भगवान कहाँ है तू? ये कब जाएगा? कोरोना कौन वापस ले जाएगा? कब तक रहेगा? ये मास्क जाएगा कि नहीं? ट्रैवल नहीं कर पा रहे इसलिए लोग दुखी हैं। कई लोग हैं जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, कई लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ट्रैवल करके कोरोना लेके आके वो अस्पताल में पैसा भरते हैं। There are all kinds of people in the world, and if you believe in the theory of karma, everybody is settling their accounts. In that case, अगर हम बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो हम अंदर भी तो ट्रैवल कर सकते हैं ना। Corona has given us time to travel within and look within. Lewis has also said it is safe to look within. पर हम अंदर जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमारी खुद की पास्ट मेमोरीज, गलतियां, इमोशंस, अनबन जो हम नहीं याद करना चाहते हैं वो सब हमने सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखा होता है, and it is difficult for us to go and look at it. एक्सप्रेस हाईवे पर चलने वाली हमारी जिंदगी कोरोना ने रोक दी है, तो शायद वो जो खुद काम अंदर करना है, we need to go deep and dig down, जो हमारे काम का नहीं है। जैसे हमारी अलमारी में जो साइज के कपड़े अभी हम नहीं पहन रहे हैं बदल देते हैं, पुराने हो गए हम बदल देते हैं। हमारे वहां न्यूज़पेपर आता है तो अगर हमारे घर की या कोई पहचान वाले की अंदर फोटो या न्यूज नहीं है तो हम उस पर पस्ती में डाल देते हैं। Why cannot we do that with negative thoughts? अगर हम नेगेटिव थॉट को भी पस्ती में डालना सीख जाएंगे तो हम पाइल अप नहीं करेंगे। And lastly, if I have to say anything about immunity, ये सब के ऊपर हम सब बोलते हैं that money can buy things, and उसी के साथ एक ऐसा भी स्टेटमेंट जुड़ जाता है कि सब कुछ चीज पैसे से खरीदी नहीं जाती है। जितना जरूरी विटामिन सी है उतना ही जरूरी विटामिन एम है।
यहाँ याद उतना रखना है कि सोशल इमोशनल हैप्पीनेस इम्यूनिटी बनाए रखनी है तो जैसे ब्लड ग्रुप को चेक करके ब्लड में दिया जाता है, अदरवाइज दैट कैन किल द पर्सन। हम जहां भी है, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र से हमारी आमदनी हो रही है, जहां से हमारी अर्निंग हो रही है, लेट्स बी वेरी एथिकल। ब्लड ग्रुप की तरह हमारा धन ग्रुप भी देखना जरूरी है। द मनी दैट कम्स टू अस विद एथिक्स, खाना जो प्यार से पकाया है वो भक्ति बन के प्रसाद हो जाता है, उसी तरह से पैसा जो हम कमाते हैं वो नीति से आता है, तभी हमारे काम का है। So when I talk of immunity, thank you so much for giving me this opportunity and liberty to talk beyond only the science of human body, because I personally believe it is whole person health, the concept of WPH। हम रोगी की दवा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम रिपोर्ट को ट्रीट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। We want to help and assist human being to heal their own life. We are instrument of God. Each person sent on the planet is given some divine homework. Am I doing my duty well? Do I do justice to the potential that God has gifted me? And if I have something extra, am I being able to overflow my cup and share with others? And that is joy of sharing. So whenever such invitations are there, and especially if it is for the youth of college and organization, I usually choose to be there rather than denying, regardless it stretches my day and working hour, more so when it is early in the morning to start my day with medical surgical practice. But I am an optimistic. I feel and I wish कि अगर आज हम youth के अंदर ऐसे विचार डालेंगे, if we can put the seeds in young minds, there are all good chance and hope in the bright future that we can do wonders in years to come. It is the duty of the society, academic organization, may it be medical fraternity or any single organization and citizen, if we choose to nurture the wholesome seed of love, care, compassion, हम एक बहुत ही स्वस्थ समाज का निर्माण जरूर कर पाएंगे। ये जो कुछ भी आज बात करने का मेरे को मौका मिला, इसके लिए सबका धन्यवाद। आप अगर ऐसी बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट टू माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब, which is youtube.com Dr. Darshana Thakkar. I apologize to everyone if you send me friend request on Facebook profile of Dr. Darshana Thakkar. I will not be able to accept for the reason of having that ceiling of 5,000 by FB. But there is Facebook page called doconmission.net. You may like the page and stay connected. If you have any other question, you can send me on WhatsApp 98240-69989. And at last, I am so happy and proud to be a doctor and more happy to give an affirmation along with prescription. And I'll end my talk with that. Affirmation क्या चीज है, visualization क्या चीज है। मेरे पास डर है तो मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, मेरे पास scarcity है तो मेरा संघर्ष ज्यादा है। Can I visualize abundance? Am I ready to receive from the abundance of the universe? Affirmation is a sentence formed using powerful positive words. It is drafted in present tense and it is personalized. कोरोना के पैंडेमिक के दौरान आईसीयू में भर्ती हुए पेशेंट्स के लिए, चिंतित है ऐसे उनके स्वजन के लिए, people who are home quarantined, people who are having fear of corona, I keep creating audio clips of guided visualization and meditation, and that's in circulation helping millions of people. I thank Almighty for whatever potential that God has gifted me, and I wish that till my last breath, with the divine guidance and the power within, I keep sharing it. Thank you so much for joining the session and listening it. Hope we keep connected because Vasudhaiva Kutumbakam की तरह हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरह से तो जुड़े हुए हैं ही।
फिर हम ईमेल से जुड़े, व्हाट्सएप से जुड़े, फेसबुक से जुड़े या वर्चुअल प्लेटफॉर्म से, whatever it is, count me in. I'm there for you. If you need me anytime onto corona care, emotional health management, don't hesitate. I'll try to help you the best. Thank you so much, Darshan Bhai, the complete organizing team, and all the organization today who could take this pain and efforts to organize that session.